Recording on. Yes, Mohsin. Hi, Khulud, how are you? Hi, how are you? Can you see the question that has popped up, Nietzsche? Yeah, I can see the list. Okay, we'll discuss this in the end. Yeah. So let's start with introduction. Hi, everyone. Assalamu alaikum. I am Dr. Khulud Shafi. I am a general physician, certified fitness trainer, and certified fitness nutritionist. Today, the aim of this entire live session is to make it interactive, informative, and shortened, so that हम एक दूसरे की बात अच्छी तरह समझ सकें. We're not here to throw in jargons or have a very intense medical language to impress anyone. We just want to give out information to people, and we want to help them out in their queries. कोई भी सवाल हो आपका, कोई भी आपकी कोई भी सवाल हो, कोई भी यानी कि कोई भी मिथ हो दिमाग में जो कि आप लोग चाहते हो कि ये सही है कि गलत है, so it's very important कि हम उसको validate करें from an authentic source. So validation is very important. कि where are you driving the information from, and who are you driving the information from? So I will, along with my colleagues who are very what do you say, amazing in what they do, running out of adjectives right now, so it's okay. So the thing is that they will try to help out in the best of their capabilities. So we have a couple of questions lined up, and the other introduction that I want to make is very important person. In a lot of ways, he is great at his work, and he is a very, very dear friend. And I will not only quote him because he's a dear friend, so he's really good at his work, but he is actually very good at his work. He had been working in Pakistan for a very long time, and now he's abroad. So this is Dr. Mohsin Azam, who's going to join us today. He's an orthopedic surgeon and a very renowned one, and does a great job. I can say that for a surety, because he's worked on my family, and no one would allow to touch anyone's family without immense faith in someone. So he is right now, besides doing a great job at orthopedic surgery, he's doing amazing stuff in corrective surgeries also. So after the session, if you want to ever have a consultation with him, he'll be there online, I'll be there online, and we would like to help everyone out in the future. And he can always come down also for anyone who wants assistance and consultation and surgery. So the first question that came to me was, are vitamin supplements really helpful and beneficial, or is it a pharmaceutical industry cash grab? And if they are useful, then which ones are recommended? Okay. I would say that it might sound a bit odd, but everything is not a conspiracy theory here. Okay? So there are diseases which occur because of germs. There are diseases which do occur because of deficiencies. So yes, if you have that logic in the head कि deficiency है, आपको कोई चीज कमी है और आपको आप बीमार पड़ रहे हैं, तो हाँ, yes, there is a significance of vitamins in life. But that surely doesn't mean कि आप अपनी मर्जी से जब चाहें vitamins खा रहे हो. I always suggest people that you should understand that पहली बात तो it's a physician's responsibility to identify and understand if there is a deficiency, कोई कमी है कि नहीं है. और दूसरा केस ये कि अगर कोई बीमार है या किसी दवाइयों पे है, तो क्या वो ये डिफिशिएंसी, ये कमी डेवलप कर सकता है कि नहीं, तो उसको प्रीएम्प्ट करना और उसके ऊपर नजर रखना और फिर उसको रेक्टिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एक इंपॉर्टेंट बात, दैट योर फूड शुड बी योर मेडिसिन. Your medicine should not be your food. What we are doing now is that हम nutrition wise खाने में वो चीजें नहीं खाते which can actually give us nutrition, and हम वो सब चीजें vitamins खा के पूरी कर रहे होते हैं. We should understand कि vitamins के absorption से वो चीजें उतनी absorb नहीं होती जो आप general life में खा के absorb कर सकते हैं. पहली बात.
ऑल सेड एंड डन अबाउट दिस, एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हमें फिर भी विटामिन के बारे में जानना चाहिए कि हमें किन चीजों के ऊपर नजर रखनी चाहिए इन डेली लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना हीमोग्लोबिन की सीबी से कराएं, हीमोग्लोबिन आएगा, उसके अंदर और बहुत सारी चीजें नीचे लिखी होती हैं जो बताती हैं कि आपके अंदर आयरन की कमी कितनी है और आयरन कैसा है, ठीक है। सो आयरन लेवल्स पे नजर रखना। सेकेंड ऑफ ऑल कैल्शियम एंड विटामिन डी, सबसे ज्यादा कैल्शियम और विटामिन डी की कमी देखी जाती है। नियरली एवरीवन दैट यू गेट्स टेस्टेड हैज दिस डिफिशिएंसी, चाहे वो किसी भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से ताल्लुक रखता हो। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फीमेल्स के अलावा मेल्स में भी ये कमी बहुत ज्यादा देखी गई है। आई कम अक्रॉस मेल्स आल्सो with vitamin D as low as 9, as low as 6. सो कैल्शियम और विटामिन डी के ऊपर नजर रखना, और अगर आपके पास एक दफा कमी आ गई है तो आप उसको डॉक्टर से पूछें कि किस तरह इसको करेक्ट करना है, किस तरह इसको मेंटेन करना है, और उसको हर 6 महीने बाद एटलीस्ट रिपीट करा लें। और जिनके पास नहीं है कोई कमी, वो साल में एक दफा तो टेस्ट करा ही ले। सो विटामिन डी एंड कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट. Zinc is another thing that I feel is very important, and although we don't get it tested for zinc, but there are a lot of symptoms, बहुत सारे अलामत ऐसे होते हैं स्पेशली इन मेल्स, जो मैंने देखा है कि जिसकी वजह से करेक्शन अगर की जाए तो बहुत सारी चीजें छोटी सी बड़ी सही हो जाती हैं। विटामिन के बारे में बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप जब विटामिन खाते हैं तो हमें उसकी इंटरेक्शन के बारे में पता नहीं होता। अब आप एस्पिरिन खा रहे हैं, ब्लड थिनिंग दवाइयां खा रहे हैं, विटामिन ई खा रहे हैं बिकॉज आपको स्किन अच्छी चाहिए और बाल अच्छे चाहिए, एंड तो यू नो इट दे डोंट गो वेल। यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस कि हर चीज आपके फायदा मंद नहीं हो सकती, कुछ चीजें आपको नुकसान भी देती हैं। इसलिए डॉक्टर का ये जानना बहुत जरूरी है कि आप ये क्यों खाना चाह रहे हैं, पहली बात क्या आपको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। सो यू कैन नॉट बी योर ओन डॉक्टर, yes, but you can be a very alert person who should know and should be able to read their own body कि आपकी बॉडी आपको क्या कह रही है और क्यों कह रही है। क्यों का जवाब आपको डॉक्टर दे देगा, क्या कह रही है वो आप खुद कर लेंगे। और अगर आप एक टाइम से अपने साथ ट्यून है तो कुछ क्यों के जवाब आपको खुद भी मिल जाते हैं। So you just have to be very alert with yourself and with your surrounding, and do not jump to every other thing that you see कि कोई कहता है जी ये भी खा लें घुटने के लिए, ये भी खा लें इस चीज के लिए। These are studies which are going on. Yes, there's trial, you can have them, but there's no sure shot thing कि ये खाएंगे तो ये सही हो जाएगा। But you should always see, say ग्लूकोसामीन लोग बहुत खाते हैं, कॉन्ड्राइटिन के वो आ रहे होते हैं, कोलेजन की सप्लीमेंट्स आ रहे होते हैं, चीजें ऐड ऑन कर रहे हैं, ऐड ऑन, yes they do help, but you still should consult a doctor before just popping pills and adding on to it. I think that should be I think that this should answer my question, your question. अगर कोई और बात हो तो you can always send in a request. And important बात, yes, एक example मैं और देना चाहूंगी. If I keep on going, I'll just keep on going. मगर then again it just popped up that, see, we have a lot of folic acid. Females have a lot of folic acid. When you're expecting, you have it more. When you're not expecting, you tend to have it. Thalassemia might need to have it every day. And generally, you know, if you are anemic, you have a cocktail of folic acid and vitamin B12 and other things, iron and all, so that आपका anemia अच्छा हो जाए, iron deficiency anemia especially. होता क्या है, ज्यादा फॉलिक एसिड खाएंगे तो विटामिन B12 की डिफिशिएंसी से जो आपको सिम्टम्स आने हैं ना, वो कैमोफ्लेज हो जाते हैं. सो इफ यू आर हैविंग विटामिन डी डिफिशिएंसी, यू विल नॉट बी एबल टू रीड, और क्योंकि आपने फॉलिक एसिड इतना खाया जो कि कैमोफ्लेज हो गए. सो यू नो, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ टेलिंग यू कि नॉट everything can be had every time. There should be a rhyme and reason for why are you having it. अच्छा, एक सवाल जो अभी पॉप अप हुआ था, we will get back to the major issue that there's a big discussion that we need to go on today, we're going to discuss today, is about the knee. The knee is a very important joint, a very abused, I'm sorry to say, joint, a very least looked after. बेचारा मेहनत बहुत करता है मगर उसको कोई look after नहीं कर रहा होता. और everyone has the first joint that actually mostly gets affected. In my experience, in the what I've seen is mostly the joint. Then comes the back.
मगर आजकल joint and neck is the topmost. The text neck is very famous. Cervical spondylitis, test neck, computers, laptops, cell phones, head level barabar nahi khair. That's another topic that we're going to touch later. And then back. So the important part that you need to understand is that every joint gets dependent on each other eventually. आपकी बॉडी में एक जगह डिसबैलेंस क्रिएट होता है, सो दूसरा पार्ट उसको पहले उसका दूसरा हिस्सा उसको कंपनसेट करता है. जब वो उसको कंपनसेट नहीं कर पा रहा होता तो कोई दूसरा बॉडी का पार्ट उसको जॉइंट कंपनसेट कर रहा होता है. सो दिस इज इमेजिन योरसेल्फ लाइक अ टॉल बिल्डिंग. आपने बिल्डिंग की इमारत में से एक लेवल को हिलाया तो ऊपर नीचे के सारे लेवल हिलेंगे, इमारत गिर जाएगी. So you need to understand, you need to balance your body weight, you need to balance your muscle strength, you need to balance your joints in that case. घुटने खराब हैं, घुटने दर्द करते हैं, घुटने तकलीफ देते हैं, घुटना नहीं हिलता, घुटना जैम हो जाता है, क्या करें? And this is not only a problem that हम एक एज पे आके कहते हैं कि जी हाँ आप तो ये जो घुटने गोडे गिटने गिटे रह गए हैं आपके, नहीं. ये I am seeing this happening in girls hitting soon after puberty, 21, 22 की एज ग्रुप से भी बहुत ज्यादा है. और उसके बाद तो फिर भूल ही जाएं when you're hitting the 30s and you produce kids. And that too, not only females. हम हमेशा females को focus करते हैं considering that they're very weak in strength, but actually females come across to be very strong and resilient beings because they are mothers. They give birth, they go through a lot hormonal changes and they face it. I'm not offending the men, I'm just saying that. एक बात बता रही हूँ medical point of view से. Males के अंदर ये होता है कि वो समझते हैं it's a mental thing, that the thing कि you know हमें क्या होना है, दूध दही. औरतें नहीं ले रही होती तो मर्द को तो भूल ही जाए कि दूध दही हाँ खा लेंगे, कभी ले लेंगे, whatever. So and then they try to keep themselves trained. They work out more, they want to keep themselves trained. I'm talking with the people, and they go out considering गाड़ी चला रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, औरतें भी जॉब करती हैं, मगर you know considering our culture in general around, men tend to work out, go out more because they need to go out and earn the bread and butter. So ठीक है, the movement is more. बहुत चीजें ultimately strain हो गया घुटनों पे, जिम भी जा रहे हैं. No, you don't know exactly कि कौन से ग्रुप मसल्स पहले आपने स्ट्रेंथन करने हैं और उसके बाद आपने घुटनों पे कितना वजन देना है. तो पहले आपने तबाही मचा दी, उसके बाद फिर आपने मजीद तबाही में, this becomes a vicious cycle. In my experience, because when I train people, I see this a lot and I hear this a lot from both the genders. So let's start with one complaint at one time. कि एक इंसान आके, एक शख्स आके मुझे क्या कहता है, क्योंकि उसी से रिलेट करना बेस्ट होगा. बिसाइड इसके मैं एक डॉक्टरी अल्फाज में आप लोगों को समझाऊं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, उसके लिए डॉक्टर मोहसिन है मजीद एक्सटेंड करने के लिए चीज़ों को. सो ही इज गोना मेक put more flowers on it and make it more nice. And so the first thing is that a stiff knee, घुटना अकड़ गया, मेरा घुटना अकड़ गया है, बस ये अकड़ा हुआ है, अकड़ जाते हैं घुटने मेरे. अच्छा जी, अकड़ जाते हैं, अब क्या करें? सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू वुड आस्क. आपकी मेडिकली आप कहाँ जाएंगे? आपका दिमाग डॉक्टर के लिहाज से अलग जाएगा, ट्रेनर के लिहाज से अलग जाएगा. बिकॉज मैं एक जनरल फिजिशियन हूँ और एक ट्रेनर हूँ, तो मैं प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकती हूँ, मैं इनिशियली उनको संभाल सकती हूँ. केस बिगड़ जाएगा तो मैं कहूँगी डॉक्टर मोहसिन संभाल लें. सो मजीद यानी कि अब ये मैंने सब कुछ कर लिया, ये नहीं हो रहा, आप देखें जी, हम हमारा ये करा के मैं भेज दूंगी. मैं बोलूँगी जी मैंने भी देख लिया, मुझे भी ये लग रहा है, आप बताइए अब क्या करें, इनके घुटनों को चेंज करा जाए कि नहीं, पर वो बता सकते हैं. मगर स्टिफ नी का जो एक मोटी सी चीज मैं आपको बता सकती हूँ कि ये कि पहली बात तो होती है कोई चीज इंजरी होना. आपको पता है शो शॉट आपने इंजरी कहीं लग गया घुटना, एक हर इंसान को पता है कि इंजरी हुई तो हाँ जी तकलीफ हो गई. दूसरी बात है आपने ज्यादा स्क्वाटिंग कर ली, जाते ही सबको बड़ा शौक होता है लंज स्क्वाटिंग करेंगे हम, यू नो ये करेंगे. You lifting heavy weights above your head and you're squatting, even if not that, you just have your own body weight. Recognize आपको अल्लाह ने एक वजन दिया है,
जिसको आप सहारना समझना डिस्ट्रीब्यूट करना सीखें, आप उसको लेके स्क्वाट और लंज करें, जिंदगी में आपने कभी नहीं किए। पहले दिन जाके यू वेरी इंथुजियास्टिक, एक हफ्ते बाद पता चला जी आवाजें टक टक स्टिफ हो गया, सही है। अच्छा, अब हमें ये भी नहीं पता कि पहले से कोई अंडरलाइंग डिजीज थी, उसके ऊपर आपने एक्सरसाइज भी दबा कर ली, उसके बाद न्यूट्रिशन भी आपने कहा जी कैलोरी भी कम खाऊंगी खाऊंगा, और दे दबा आई वांट गेट चिजल्ड, यू नो, ये मसल बाइसेप 16 18 जबरदस्त, यू नो, मैंने कहा हाँ जबरदस्त। उसके बाद एक हफ्ते आपने खूब मेहनत की, घुटने रह गए, उसके बाद 2 हफ्ते आप बिस्तर में पड़े रहे। ऑल्दो आई नेवर सजेस्ट इमोबिलिटी, दे यू नीड टू वर्क अराउंड इट, ठीक है ना। यू इट्स नॉट दैट कि आपको आर्थराइटिस के लिए इंटरनेशनल रूल ये है रोमेटॉइड आर्थराइटिस की, यू नीड टू वर्क आउट 15 मिनट्स एवरी डे, ट्वाइस अ डे। हमारे यहाँ मिसकंसेप्शन है, दर्द हो गया बिस्तर पे लेटा दो। भाई आप एक दरवाजे में तेल डालते हैं हिंजेस में, ठीक है ना, आवाज में कड़कड़ कड़कड़ क्रीक की आवाज आती है, क्या तेल डालते हैं, हिलाते हैं, आवाज चली जाती है। जॉइंट्स आर लाइक दैट, यू नीड टू, आवर बॉडीज आर मेड टू मूव, यू डोंट मूव देम देयर विल बी रिस्ट्रिक्शन की वजह से स्टिफनेस होगी, बिकॉज फ्लूइड ही नहीं बन रहा ना, वो सर्कुलेट हो रहा है, तो वो जाम हो गए। ऑयलिंग करेंगे फिर दोबारा हिलेंगे, बट दैट्स नॉट द वे फॉरवर्ड, दैट actually gives a long term has effects. अच्छा, इसी के ऊपर इसी क्वेश्चन पे बेस्ड हम ये सब बातें करेंगे। क्वेश्चन एक और था, द डूज एंड डोंट्स ऑफ बोन हेल्थ, स्पेसिफिकली नी हेल्थ, as individuals in our early to mid 40s, what can we do to prevent major knee issues in our 60s and 70s for both men and women? यानी कि जल्दी इस बात को समझ जाए कि कैसे सही रखना है, ताकि 60-70 में जाकर मसला बड़ा ना हो जाए। सो स्टिफ नी पहली चीज आनी चाहिए दिमाग में, इंजरी हुई कि नहीं हुई, एक्सरसाइज के ऊपर जो समझाया। मेडिकली आप देखें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है कि एक सिंपल सी बात है कि कार्टिलेज है आपकी जॉइंट्स के बीच में, वो जो है इन्फ्लेम्ड हो गया है, और वो जो है अपना फंक्शन नहीं कर रहा, तो देयर इज एक्सेसिव रबिंग बिटवीन द जॉइंट्स, और ये जो स्पेस होती है कुदरती दीज के बीच में, जॉइंट्स के बीच में होती है, जो कार्टिलेज होता है वो कम होती जाती, ठीक है। वो जब कार्टिलेज कम हो गया तो you know this is nothing to protect, and this rubbing is going on. So Mohsen, Dr. Mohsen, will you take over from there, please? Yeah, hi. Hi. Okay, I took a lot, that sorry. was intense. I like it. All right. So good to be here. बड़ी अच्छी introduction or opening. You went on and on. It was You very know, I'm, amazing. I'm I'm setting a ground for myself. God forbid, never would I want to go under the knife. But then again, I've always said, if I ever do, you will be the one. Exactly. Yeah, I hope not. I hope Anyway, not. let's start off with your questions. Look, you're right. People ignore their symptoms and they keep going on and present when they feel like presenting, or usually when things are quite out of hands. Let me take your questions one by one. You've talked about use of vitamin. Look, general vitamins have been around for many years. Over 100 years, medical science has known the use of vitamins. Their deficiencies have known to cause problems, and hence the need for checking if you have any deficiencies and fulfilling them, so that things become normal if you have disease related to the deficiency. Most commonly for us in orthopedics is vitamin D. As time is going by, people are doing studies to find out more and more uses of the vitamin, especially vitamin D. It has been related to, we know, of course, calcium absorption, which is the most essential function of this vitamin as we know it. Having bone health, because when you're younger, say in your growing age, and even up to the age of early 20s, you are depositing calcium in your body. The more calcium you have in the body, the longer it will last throughout your life. Having said that, the other reasons for bone strength is putting load on the bone. The more load you put on the bone, the stronger it becomes. This goes for bones and muscles in the body. Hence, the reason for advocating exercise and movement throughout your life. The recent move to the sedentary lifestyle
and staying indoors have caused both these problems. One, you're losing muscle power, you're losing motion in your joints, and of course, you're losing vitamins, because vitamin D is converted to an active form in your body when your skin is exposed to sunlight. And as we're more and more indoors, living our office lives and home lives in air conditioned environments, our skin exposure to vitamin D is getting less and less, hence the need for supplements for everyone. If you check vitamin D levels for most of the patients, we are vitamin deficient, especially people who are mostly indoors. So it is important to go out, at least have some exposure to sunlight, so that we can convert the vitamin D in the body. And if you can't do that, of course, supplements are the way to go. So vitamins do help. Uh, Newer things, for example, in joints, uh, talking about hyaluronic acid, chondroitin sulfate, they're very common nowadays. Uh, as far as our guidelines in science is concerned, uh, not a lot of benefit has been shown as far as proper trials are concerned. But having said that, they do work for some patients, psychologically, placebo or actual function. I'm not exactly sure on that, but if it's working for you, take it, uh, try it. If it doesn't work for you, stop taking it. But if you ask me whether it works or not, scientifically, we don't have enough evidence or proof to say that it does. So, but these are not part of the regular vitamins that we know of. So this is a separate realm. Dr. Mohsin, one thing that I've seen in nutritionally, and as said in, as we have discussed, these two supplements, the collagen, the other two supplements that you're talking about, इसके अलावा glutathione tends to be very famous amongst people with the knee issues. Mhm. And Again, I've, whatever both, has yeah, so the thing is that कि वही वाली बात है कि it's more psychological, maybe because studies nahi hai, magar in some patients and in some people it has tend to help. So the studies are underway, but on a nutritional point of view and a training point of view, uh, glutathione has a good evidence, inference, effectivity on the patients. So Okay. बाकी तो बहुत सारी चीजें आ रही हैं, वही बात है कि जिसको में to each their own हो जाता है, मगर you're right, I'm just saying कि what do you feel about that? Look, to me, unless you have clear scientific evidence, we're supposed to practice evidence-based medicine. That Exactly. means that Yeah. we should have proper trials to Hmm. say for certain that this thing works. If it is iffy, then of course, with all explanations that whether or not it works, we can take some decisions based on you know specific patient, specific condition, but we cannot generalize the rule. No, we can just run a trial ourselves to see how Yeah, is if, it if going. you're if Yeah. you're doing in a proper Yeah. environment, why Yeah. not? Yeah. Okay, Acha. let's move on to knee stiffness. Uh, Look, knee stiffness is the first sign usually of the fact that something is going on in the knee, because we're walking on the knee, and this is a joint whose, if the movement is restricted in any way, you feel it, the most prominent that there's something going on. You wake up in the morning, you try to stand, there's pain or stiffness, you can't move the knee, something's going on. So knee stiffness is usually the can be the first sign of a lot of problems that can go on in the knee, and it's usually closely followed by pain. So initially, maybe you have stiffness for a little while, and then later it will convert to pain. Reason for knee pain and stiffness can be many. If you look at it, simple knee injuries like sprain and strains, uh, these are to begin with, and if you look at them in depth, or maybe exaggerate this, then it can be injuries to the ligaments, which can also be sprains based on grades. Simple sprains are just a pull on the ligament, which may occur because of a wrong position, or you moved suddenly, or you twisted your leg, or you were walking on an uneven surface.
to sports injuries where you get a higher grade of a ligament injury, which can even reach up to a complete tear of the ligament. Apart from that, the knee is not just a simple hinge. It has a lot of structures associated to it. So ligaments, there is cartilage at the end of the bones, which is the soft bone on which we walk, and which bears the weight and allows for smooth gliding of both the bones on top of each other. Then in between are menisci, which are small discs, as you can say them. These are to position these round edges of the thigh bone, called condyles, over the flat surface of the shin bone, which is the tibia. So when both of this round surface runs on the flat surface, these discs help that to allow for that gliding movement, so that when the knee bends, the position of these joints remain stable. And due to some, yeah. Sorry, I'm just trying put in a few things ताकि वो लोगों को ये हो कि मैं सिर्फ ये कहना चाहती थी कि आप जो भी डिस्क्राइब कर रहे हैं, the menisci damage, right? Can हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि लॉक नी, कि कोई आगे कहता है कि जी मेरी नी लॉक हो जाती, तो क्या दिमाग वहां, आई एम जस्ट सेइंग इट ताकि लोगों को थोड़ा सा पता चले कि अगर है तो क्या हो सकता है। जो अभी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो क्या उस सेट में सही बैठ सकता है? हाँ, लॉक नी जो है वो मोस्ट लाइकली जो है वो मेनिस्कस इंजरी से ही होता है। जैसे मेनिस्कस का एक हिस्सा टूट गया है और वो अपने ऊपर ट्विस्ट हो जाए और इट डजंट अलाउ फॉर द लाइक आई सेड द ग्लाइडिंग मूवमेंट, तो आपको ऐसे फील होता है कि नी लॉक हो रहा है। वो नी लॉक क्या है कि या तो फिजिकल लॉक होगा इफ द पीस हैज ट्विस्टेड ऑनटू इटसेल्फ, ठीक है, और you feel a sharp pain when you reach that area where the meniscus is damaged in your knee bending. So when the bone arrives at that spot where there's pressure on that broken area, so उस सूरत में जो है वो you feel a sharp pain and you can't move any further. हम ये डायग्राम में जरा नी दिखा सकते हैं लोगों को थोड़ा सा? Let's तो जरा उनके लिए समझना आसान होगा, वो टिबिया फिबुला फीमर में बेचारे वो गुम हो जाएंगे। Okay, so let's look at the image. I pulled out a few for you ताकि we could discuss. एक अगर हम बेसिक नी स्ट्रक्चर दिखा दें उनको ऊपर का। if you look at this, let me सबसे ऊपर वाला पहले दिखाएंगे, ये वाला दिखा देता हूँ। This is the best अच्छा one. चलें, ओके, ये मैंने अगर आप इधर देखें तो you can see this is on the top where my arrow is right now, is the white portion है, the white portion. This is the cartilage on top of the thigh bone, ठीक है। और अगर ये नीचे जो C shaped दो structures हैं, ये meniscus वाले जी, पिंक वाले उनको देखिए जी बिल्कुल। और उसके अलावा जो आपको ये ग्रे स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, ये लिगामेंट्स हैं। देयर आर 4 मेजर लिगामेंट्स इन द नी। एक बाहर की तरफ है, उसका नाम है लैटरल कोलैटरल लिगामेंट, और एक अंदर की तरफ है नी के, उसका नाम है मीडियल कोलैटरल लिगामेंट। मैं और थोड़ी सी एक इनको ये सिर्फ उर्दू में बताना चाह रही थी जनरली कि लिगामेंट होता क्या है। ये हमें वैसे तो पता होता है, लिगामेंट जो होता है, ये जो डॉक्टर मोहसिन बता रहे हैं, जो ग्रे वाली पट्टियां नजर आ रही हैं आपको, ये जॉइंट्स को आपस में मिला के रखते हैं। जब हम टेंडन, straps, you can call them straps. स्ट्रैप्स होते हैं जो कि two big bones together. Exactly. जी बताइए प्लीज, कैरी ऑन। So these straps usually hold these two bones together. और अगर कोई भी जो जिसको आप कहते हैं जी स्प्रेन हो गया नी में या किसी भी और जॉइंट में, जैसे एंकल में स्प्रेन होता है, तो वो यूजुअली इसी लिगामेंट के स्ट्रेच की वजह से होता है, ठीक है। एंड इफ योर नी ट्विस्ट, फॉर एग्जांपल, यू एकदम से आप खड़े होने की कोशिश करें, आपका पाँव जो है वो थोड़ा सा इन्वर्टेड था या बाहर की तरफ था, और आप एकदम से उसमें खड़े हो गए, you stretch the ligament, and then when the ligament is stretched, it's a sprain, and that causes inflammation and pain. Usually normal sprains जो होते हैं वो 2 से 4 हफ्ते में खुद ही ठीक हो जाते हैं by some rest. ज़ाहिर आपको दर्द होगी, आप भागेंगे नहीं, आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपका sprain जो है वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, एक और बड़े मजे का सवाल आता है, लोग कहते हैं, आते हैं मेरे पास, कंप्लेन आती है कि हम जब खड़े होते हैं तो आपको ऐसे लगता है जैसे आपका घुटना निकल जाएगा, इट्स गोना पॉप आउट, यानी इट गिव्स वे, आप पूरी स्ट्रेंथ अपने घुटने पे डाल नहीं पाते, तो आपको ऐसा लगता है इट्स गोना कम आउट। तो उसमें जो डैमेजेस होते हैं वो किन किन चीजों के हो सकते हैं? सबसे कॉमन रीजन फॉर द नी गिव is an injury to the anterior cruciate ligament.
ठीक है, ये सामने जो आपको ये वाला स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये प्रिवेंट करता है कि आपकी जो शिन बोन है वो जो आपकी थाई बोन है उसके नीचे से आगे की तरफ उसको जाने से रोकता है। तो यूजुअली स्पोर्ट्स इंजरीज में, फुटबॉल इंजरीज में, एक्सीडेंट्स में नी के अंदर जो है वो सबसे कॉमनली डैमेज चीज जो है वो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है। तो इफ योर एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इज ब्रोकन, उस सूरत में फिर आपको ये एक नी की गिव की फीलिंग आती है। ठीक है, और एक अगर और, ये ये प्लीज आप और जब भी अगर बता आप लें तो फिर एक्टिव बड़े स्पोर्ट्स सवाल। में या हम्म। अगर आप एक्टिव एक्सरसाइज में या रनिंग में एक्सरसाइजेस रिक्वायरिंग ट्विस्टिंग ऑफ योर नी, इन दैट केस यू रिक्वायर सर्जरी टू रिपेयर दिस Especially एंड when you're रिकंस्ट्रक्ट द kicking, लिगामेंट। this can यस। happen to you when you're kicking, you're doing kickboxing, बहुत कॉमन होता है, इसलिए क्योंकि मेरे साथ हो चुका हुआ है, so I'm telling you all of this is common. अच्छा, in that, अच्छा एक और बड़ा आता है कि जब मैं नी बेंड करती हूँ तो पेन और स्वेलिंग में, बहुत तरीके से लोग नमाज पढ़ते हैं, घुटना बेंड करके बैठते हैं या यू नो क्रॉस करके बैठते हैं, ये जनरली बेंड करते हैं जमीन पे, तो उनके घुटने के अंदर एक हेवीनेस प्रोड्यूस होती है, जैसे उनको लगता है जैसे घुटना फूल रहा है, सूज रहा है, सूजन वो तो पहले से होती है मगर मजीद बड़ा एक फिलिंग फीलिंग आती है व्हेन यू बेंडिंग योर नी, यू नो, अ फुलर फीलिंग एंड अ पेनफुल फीलिंग, जैसे पानी भर गया है। सो वुड दैट गो टुवर्ड्स बर्साइटिस? एंड आप थोड़ा उसको एलैबोरेट करेंगे क्या क्या हो सकता है उसके अंदर? बेंडिंग नी देखिए, पे ज्यादा सबसे है। सबसे जो कॉमन चीज है, एक सेकंड, जो सबसे कॉमन चीज है नी पेन में, वो ये है कि जो आपकी नी कैप है, स्पेशली जब आपको बेंड करने पर दर्द हो या जमीन पर बैठने में दर्द हो, तो जो नी कैप है आपका, इट एक्ट्स लाइक अ पुली इन द नी। ठीक है, तो अगर किसी वजह से नी की अलाइनमेंट ठीक नहीं है एंड दैट नी कैप डज नॉट ग्लाइड वेरी वेल इनटू द ग्रूव दैट इज सपोज्ड टू, ओवर टाइम क्या होता है कि वो नी का जो कार्टिलेज है नी कैप के नीचे, वो घिसने लग जाता है। ठीक है, उसके नॉर्मल सिम्टम्स क्या होते हैं कि जब आप स्क्वाट करते हैं या कुर्सी में बैठ के उठते हैं या जमीन पे बैठने की कोशिश करते हैं तो आपको दर्द होता है। तो ये फर्स्ट साइन है कि आपका जो कार्टिलेज है वो जो है वो डैमेज हो रहा है आपके नी कैप के नीचे से। So can we explain this to the जी जी, people? मैं आपको एक ऐसे सेकंड। जैसे आपकी आंख के अंदर अगर मिट्टी चली जाए तो इफ यू रब इट, तो जैसे वो मिट्टी जाके ना ग्रेनी फीलिंग होती है ना, तो एग्जैक्टली वो नी कैप के नीचे वुड इट बी लाइक अ ग्रेनी फीलिंग, एंड that's how we're rubbing it, you know, to make them understand या with the knee cap. व्हाट हैपेंस इज कि वो ग्रेनी फीलिंग क्या है कि आपको ग्रिट फील होता है जाते हुए, जब आप नॉर्मल लोग आके कहते हैं कि जी मुझे कड़कड़ की आवाज आती है जब मैं घुटना बेंड करता हूँ। ठीक है ना, तो वो जो आवाज है वो यही है कि नी कैप का जो हिस्सा है जो कि उससे रगड़ खा रहे हैं। अगर एक मैं आपके लिए इमेज लोड करता हूँ, अगर ये देखिएगा, कैन यू सी दिस? Yeah. So if you see this area in this image, you see when the knee bends, you see the mobility of the kneecap over the thigh bone. So this movement. डॉक्टर साहब, आप जरा कर्सर घुमा देंगे क्योंकि लोगों को इतना, हमें तो समझ आ जाएगी, वो बेचारे नी कैप ही ढूंढते ये हैं। जो आपके घुटने के आगे नी कैप है, ये अगर आप देखेंगे तो आप घुटना बेंड करते हैं तो ये स्लाइड करता है आपकी थाई बोन के ऊपर। एक काली सी डिस्क की नुमा चीज है जो ऊपर दो हड्डियों के ऊपर अलग से आपको नजर आई, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है इसकी मूवमेंट जो है वजह से, स्पेशली जब आप सीधा चलते हैं तो इसमें इतना प्रेशर नहीं होता है इन दोनों हड्डियों के दरमियान, लेकिन जैसे जैसे आप नी को बेंड करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा प्रेशर जो नी और नी कैप के दरमियान का जोड़ है उसके अंदर बढ़ता जाता है। फॉर एग्जांपल, इफ यू बेंडिंग योर नी अबाउट 90 डिग्रीज स्क्वाट करते हुए, तो 4 to 5 टाइम्स ऑफ योर बॉडी वेट इज पासिंग थ्रू दिस जॉइंट। सो अगर आपका वजन 100 किलोज है फॉर एग्जांपल, सो यू टॉकिंग अबाउट 400 kgs ऑफ वेट थ्रू दिस जॉइंट। तो अच्छा, इमेजिन करें कि इन फोर्सेस के साथ अगर कार्टिलेज डैमेज भी है तो यू विल फील द पेन एंड यू विल फील दिस दीस साउंड्स कमिंग आउट ऑफ द नी।
अच्छा, ये वाला दर्द लोगों को ऐसे ही महसूस होगा ना, जैसे वो स्क्वाट करें, बेंड करें, ठीक है, नमाज पढ़ें, इवन गेटिंग अप फ्रॉम द चेयर और क्लाइंबिंग स्टेयर्स, जहां भी नी पर आपको जी जी अक्सर कहते हैं घुटने पे उठने में बड़ी तकलीफ होती है, सीढ़ियां चढ़ने में तकलीफ होती है घुटने के अंदर। अच्छा, कई लोग होते हैं कि सडन टाइम एट टाइम्स यू जस्ट हैविंग दोस क्रैकिंग साउंड्स इन योर नी फॉर नो रीजन, यानी कि आप बाकायदा वो आवाज, अगर मैं यूं खड़ी हुई हूँ किसी के साथ, तो बाकायदा वो कड़ कड़ की आवाज सुनाई दे रही होती है, एंड इट डजंट हर्ट देम, इट डजंट डू एनीथिंग टू देम। तो उसके बारे में आप क्या देखिए बताएं? कुछ नॉइज आपके नी बेंड करने के ऊपर जो आती है वो यूजुअली लिगामेंट स्नैप करने की वजह से या फ्लूइड एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में जाता है। अगर दर्द नहीं है और सिर्फ आवाज आ रही है तो ये बिल्कुल बिनाइन चीज है, इससे आपको कोई नुकसान नहीं है। सो घबराने की जरूरत नहीं घबराने की जरूरत नहीं है, है। अनलेस आपकी अनलेस आपकी उसके साथ जो है वो आवाज के साथ आपको दर्द भी हो रहा है, तो दैट मींस दैट द नी कैप इज losing its cartilage, a condition called chondromalacia to begin with, and then later on it can become osteoarthritis. I will cut to an image. एक सेकंड रुकिएगा, देखिए अगर आप इस जगह पर देखेंगे तो ये जो इमेज है, दिस इमेज हियर, ये आपको दिखाती है कि देखें कुछ लोगों की जो नी कैप होती है वो यूजुअली उसके दोनों तरफ मसल होता है, ये बाहर की तरफ और अंदर की तरफ। पैदाइशी तौर पे कुछ लोगों का जो बाहर का हिस्सा होता है ये टाइट होता है, और ये काफी लोगों में होता है जो कि हमारी तरह फ्लैट ग्राउंड वॉकर्स हैं, उनका जो इनर मसल है वो वीक होता है, जिसकी वजह से ये जो नी कैप है ये थोड़ा सा साइड पे टिल्ट करता है, और जब इसके ऊपर ज्यादा फोर्स पड़ती रहती है इस तरह एक तरफ जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, तो आहिस्ता आहिस्ता जाकर ये एरिया का कार्टिलेज जो है वो इंजर हो जाता है, एंड यू डेवलप व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट chondromalacia, एंड लेटर ऑन इट कैन बिकम osteoarthritis. So the best course forward, starting from a very younger age, as in my जो मैं लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि देखें, आप बहुत सारे घर के काम करते हैं और आप ये समझते हैं हम तो बहुत एक्टिव हैं, बहुत एक्सरसाइज करते हैं, दैट इज एक्सर्शन, बिकॉज आप माइंडफुली उस मसल से एंगेज होकर कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, ठीक है, यू बीइंग एक्टिव, दैट इज जबरदस्त, दैट्स गुड फॉर योर हार्ट एंड जनरली एक्टिव रहना चाहिए, बट आप एक्सर्ट कर रहे हैं, आप अपने बड़े ग्रुप मसल्स पे काम ही नहीं कर रहे, जैसे आपके थाई के मसल्स हैं, आगे के मसल्स हैं, पीछे लगे हुए हैं पट्टे, आपके हिप्स के मसल्स हैं, आपके लोअर बैक के मसल्स हैं, ये सारे मसल्स जो है ना आपकी कोर बनाते हैं, आपके एब्डोमिनल वॉल के सामने के मसल्स, पेट के पीछे के कमर के मसल्स, लोअर ग्लूट्स यानी कि हमारे हिप मसल्स जो पेल्विस को होल्ड करता है, और हमारे थाई मसल्स, ठीक है, जो अपर थाई अपने मसल्स हैं आपके, वो सारे आपके जो है कोर का हिस्सा है। कोर में सिर्फ 4-5 मसल्स नहीं होते, बहुत सारे मसल्स होते हैं, मगर कम से कम अगर हम एक बड़े मेजर मसल्स को यूज करें तो हम बहुत सारी चीजों को अवॉइड कर सकते हैं। सो एक्सरसाइज चाहे आप 10-15 मिनट करें, मगर कुछ ग्रुप मसल्स हैं, थाइस के चीजें हैं, बड़े वाले लार्ज मसल्स को, उनको जरूर वर्कआउट किया करें घर में काम के अलावा। इवन फॉर मेन who step out and don't have time for the gym, I suggest at a younger age से अगर आप अपनी बॉडी को एंगेज रखेंगे एक्सर्शन के अलावा वर्कआउट में, mindful workout इसलिए because if you don't have muscle memory, if you don't engage your mind and think about this muscle, you should be able to move it. See, I mean, I'm right now wearing a shirt, but you should be able to move it. And so if I say I need to move my biceps, then I should be able to move my eventually. मगर अगर वो मसल मेमोरी नहीं है तो आप जॉइंट ही हिला रहे हैं और तकलीफ दे रहे हैं, कुछ नहीं करें, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। सो डू माइंडफुल एंगेजमेंट ऑफ द मसल्स। कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में, तो प्लीज वॉक ही कर लें। दैट्स व्हाट आई टेल पीपल, वॉक इज आल्सो एन एक्सरसाइज। वॉक उस क्वेश्चन का आधा पार्ट रह गया, जो कि नीचे बैठते हैं और आपको एक तरफ जो है वो स्वेलिंग नजर आती है। अच्छा, आप डॉक्टर मोहसिन उसको ये बताने के बाद जरा इस पे भी बताइएगा कि कैसे हम यंग एज से अपने आप को, so that there is another question which we need to answer before we end, which has popped up about the psoas muscle. तो आप पहले ये खत्म कीजिए। I will just do that. देखिए जो स्वेलिंग है वो ये कि नी जॉइंट क्योंकि मोबाइल जॉइंट है, और हर मोबाइल जॉइंट के अंदर you have something called synovial fluid. Synovial fluid क्या है? You can आम जबान में उसको आप कह सकते हैं कि इट्स एन ऑयल जो कि आपके जॉइंट को सॉफ्ट रखता है, उसको न्यूट्रिशन देता है, क्योंकि जॉइंट का जो अंदर का हिस्सा होता है उसमें ब्लड नहीं पहुंचता।
सो उसकी न्यूट्रिशन जो है वो डिपेंड करती है इस फ्लूइड के ऊपर, आपके कार्टिलेज की न्यूट्रिशन, आपकी लिगामेंट्स की न्यूट्रिशन। सो अगर आपके जैसे अगर आपका नी बहुत या जॉइंट कोई भी इन्फ्लेम्ड रहता है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये इसमें रिएक्टिव फ्लूइड मिक्स हो जाता है। एक तो इस फिजिकली ये थिन हो जाता है, ठीक है। दूसरा इसके अंदर जो इन्फ्लामेटरी जो सेल्स हैं वो आ जाते हैं, और ये न्यूट्रिशन जो है वो जॉइंट की वो खराब होती है। हेल्दी जॉइंट फ्लूइड प्रोड्यूस करने का बेस्ट तरीका है जॉइंट मोबिलिटी, ठीक है। इसीलिए जो आपने बात की, मैं इट वाज रिलेटेड, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू कम टू दिस के अगर आप जॉइंट को मूव करते रहेंगे, लाइक बाय एक्सरसाइज, बाय वॉकिंग, बाय साइकिलिंग, तो हेल्दी जॉइंट फ्लूइड प्रोड्यूस होता रहता है। द लॉन्गर दैट यू हैव द हेल्दी जॉइंट फ्लूइड प्रोडक्शन, द लॉन्गर योर कार्टिलेज एंड जॉइंट विल रिमेन। जाहिर है कुछ चीजें जो आपके हाथ से बाहर है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू बॉर्न यू हैव अ सर्टेन मॉर्फोलॉजी कि आपकी हड्डियां किस तरह अलाइन होंगी। कुछ लोगों की हड्डियों की अलाइनमेंट ठीक नहीं होती, इसलिए उनकी एक हिस्से पे जोड़ के ज्यादा जोर पड़ता है, जैसे नी कैप की भी बात की थी उसी तरह। तो जैसे जैसे उस पर जोर पड़ता है वो जोड़ वहां से घिसता जाता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। तो दिस इज अ मॉर्फोलॉजिकल प्रॉब्लम विद द बैड अलाइनमेंट। उसमें भी ये कि अर्ली इन लाइफ इफ यू कैन डिटेक्ट दिस प्रॉब्लम, एंड वी हैव वेज टू करेक्ट दीज बाय मेकिंग surgeries, or by giving proper foot supports, by giving and giving orthosis supports or knee supports. तो जो क्वेश्चन है कि भाई लॉन्ग टर्म लेटर इन लाइफ आप क्या अभी कर सकते हैं उसको बचाने के लिए, वो ये है कि अगर तो आपको अर्ली लाइफ में कोई नी पेन है तो उसको जल्दी किसी प्रॉपर बंदे को, डॉक्टर को दिखाएं, ताकि वो आपको बता सके कि व्हाई इज योर प्रॉब्लम ओरिजिनेटिंग। इज इट बिकॉज ऑफ lack of motion? Is it because of injury to the ligament? Is it because of the injury to the meniscus? If you have a problem like that, you should fix it as soon as possible, because if you keep these for example, आपका anterior cruciate ligament टूटा हुआ है and you have this feeling of give and you keep on going with it, which means you're causing a lot of force on your knee joint surfaces, which will increase the chances of you developing arthritis later in your life. So if you have a problem, find it early, fix it early. ये एक रूल है। दूसरा ये कि healthy activity to keep the knee and joints healthy। ठीक है, जॉइंट गाड़ी के जॉइंट की तरह नहीं होता कि आप उसको ज़्यादा चलाएंगे तो वो गिर जाएगा। नेचर है, क्योंकि ये हर वक्त रिसाइकल होती रहती है। सो द मोर हेल्दी यू कीप इट, द लॉन्गर इट विल लास्ट। नॉट दैट कि मैं एक्सरसाइज करूंगा तो मेरा घुटना जल्दी घिस जाएगा, ऐसा नहीं होता। हाँ, और ठीक है, टॉप इट ऑल डॉक्टर मोहसिन जो कह रहे हैं ना कि वो हेल्दी एक्सरसाइज करूंगा तो नहीं घिसेगा, गलत एक्सरसाइज करूंगा करने से तो तो घिसेगा, घिस जाएगा, घिसेगा भी और उसको एग्जर्ट चोट लगेगी। एक्चुअली चोट उसको लगेगी। चोट लगेगी जो कि बाद में जाके उसको उसके डैमेज की वजह बनेगी। सो एंड एक्सर्शन इज नॉट एक्सरसाइज, ये भी आप बता yes, दें प्लीज लोगों so को। you need to know your physiological limits and you have to build on them। ये नहीं कि पहले दिन ही एग्जैक्टली जाके जो है मैं जिम में घुसा और 100 kg मैंने उठा लिए तो मैं चैंपियन बन गया, उसके बाद 2 हफ्ते तक आई कांट मूव। so this is not the way। the way is to progressively load your body so your body can catch up to what you're giving। छोटी वेट मल्टीपल रेपिटेशंस से आप शुरू करके यू कैन गो टू एनी लिमिट। द बॉडी इज वेरी अडेप्टिव, इट कैन do great things for you, but you not have to not cross its physiological limit, or not give it load which it cannot take, because that will lead to an injury। A very interesting thing that has come to our mind, अब टाइम बहुत कम है मगर नेक्स्ट टाइम के लिए हम रखेंगे। as we were discussing, as you were mentioning कि you know when people are born with morphological disorders, उनकी bones की placement और बनावट में कुदरती तौर पे कोई मसला कमी होती है, तो our next topic should be at some time point in time about flat feet। कहने को तो बहुत छोटी सी चीज लगती है, मगर बिलीव मी इन माय एक्सपीरियंस मैंने इतने लोग देखे हैं जिनको एक एज तक नहीं पता होता कि फ्लैट फीट है, और इतने प्रॉब्लम्स होते हैं उनको, दर्द हर जगह दर्द, they are compromised on working out, क्या they have been compromised on normal walking for a longer period of standing। और हम नहीं, छोटी छोटी चीजों को हम जब एक तो आम इंसान को पता नहीं होता, मगर अब हम लोग काफी जान गए हैं, हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं और यू नो विजिलेंट रहते हैं, तो हमें पता होता है बहुत सारी चीजों का ओवर द नेट भी पढ़ पढ़ के। मगर ये एक वो चीज है जो कि अक्सर लोग
मिस आउट कर देते हैं, जो कि बाद में जाके बहुत बड़ा मसला बनती है, एंड एज टाइम गोज बाय वो पूरी बॉडी की डायनामिक्स को shatter कर देती है. So there are a lot of things that we'll need you again and again for. And soon, अच्छा, एक जो question आया था which we need to answer is, will you please shed light on psoas muscle causing pressure on the knee? अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में ये बताऊं, उसके बाद डॉक्टर मोहसिन विल ऑब्वियसली टेल दिस. मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो सॉस मसल होता है वो बहुत डीपर इन द पेल्विस से नीचे आ रहा होता है. सही है. इट ऑल्सो इज इन अ वे लाइंग के जो आपकी अपेंडिक्स है वो इसके ऊपर होती है. तो जब ये वाला मसल इरिटेट होता है, जब आप टेंस होते हैं तो आपके पट्टे खिंचते हैं, तो आपको सिर्फ पेल्विक लंबर पेन नहीं होती, मगर आपको गैस्ट्रिक सिम्टम्स भी हो सकते हैं. ठीक है, ये वन ऑफ थिंग्स है. बैक पेन हो रही है, टांग के सामने आ रही है, थाई के सामने आ रही है, पीछे जा रही है, ये भी इसकी एक इरिटेशन की अलामत होती है. टाइटनिंग ऑफ दिस मसल, किसी वजह से ये टाइटनिंग हो आपकी, क्योंकि ये मसल जो होता है, ये बॉल सॉकेट जॉइंट जो होता है ना आपका हिप का, डॉक्टर मोहसिन आई थिंक सो मेरी एनाटॉमी अभी तक थोड़ी थोड़ी तो सही होगी, considering आप मुझे करेक्टली, आई ट्राई टू कीप अप विद कीप ब्रशिंग माय सेल्फ. So interesting बात ये है कि देखिए जो स्वास है ना, हाँ, थोड़ा आप डायग्राम में बता देंगे प्लीज. हाँ, जी, जी. डायग्राम में वो तो बॉल एंड सॉकेट दिखा देंगे, कहाँ से वो गुजर रहा है, क्यों इरिटेट करता है, और अगर आप नी पे कैसे आएगा वो बता दें प्लीज. वो ज्यादा टेक सेवी है, मैं अभी तक केव्स में हूँ. आई विल ट्राई टू गेट बैक. So psoas muscle जो है ना, it finishes up at the hip level. So it does not come down to your knee. Okay, usually जो पेन आपको अगर psoas muscle के related issues से होगा, that will be referred pain. Usually issues like pain coming from your back down to your knee is related to your lumbar to your lumbar discs and sciatic nerve. The ilioinguinal nerve भी तो उसमें आ जाती है, आई थिंक सो कंप्रेस होती है. The या मुझे pelvis वाली, and उसमें क्या है, देखें, this usually जो back pain coming to your leg or your knee is a symptom of sciatica. ठीक है, sciatica is pressure on the lumbar plexus, जो कि आपकी nerves spinal cord से निकल के टांगों में आ रही हैं. यूजुअली वो या तो डिस्क से कंप्रेस हैं या कोई और इशू है जिसकी वजह से हैं, क्योंकि देयर उसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी होती है. इश्यूज विद psoas muscle can also give similar can we get a diagram on this please? Yeah, I'm just sorry, I'm just being very demanding right now. let me get one. तो थिंग इज दैट कि वो जो बताना चाह रहे हैं हम लोग आपको कि जो आपका ये मसल है वो डीप पेल्विस में, एंड द लोअर बैक जो आपका इश्यू होता है ना, जो आपका वहां से लोअर बैक से जो आपकी नर्व्स निकलती हैं, वो मसल की स्पैज्म के वजह जब वो उन पे प्रेशर आता है तो वो एक रेफर्ड पेन. Let's make the long story short कि usually जो है वो psoas muscle is related to the knee, to the hip, sorry, and if you have pain in the knee, it can be other reasons. You can, in a rare situation, get pain because of your psoas muscle radiating to that area, but it does not directly affect your knee joint. ठीक है, because वो ऊपर खत्म हो चुका हुआ है. जी जी, ये डॉक्टर साहब ये बताना चाह रहे हैं. एक सेकंड में एक इमेज आपके लिए I'm trying to load. Hold on. Oh God, we can go on and on. We just need to cut it short now. हाँ, this is interesting that I think हम तो बोर नहीं हो रहे. बाकियों का जो feedback आएगा, I would love to hear, and I would love to have. Yeah, exactly. We love to hear because look, we've started this as a pilot for finding out what people like and want, and we can of course expand each and every of these aspects. So let me cut to that. Okay. So देखिए ये जो आपको orange structures नजर आ रहा है right side पे, yeah. So this is the psoas muscle. It starts in your lumbar area with your spine, and it ends in the connection to your hip, close to your hip joint, to the femur on a place called the lesser trochanter. Okay, the function of this muscle is flexing the hip and externally rotating it, which means moving it outwards.
So that's the picture. So जिनका ये सवाल था वो घबराए ना. This is a referred pain and you should get your knees checked too. अगर तो शोर diagnosis है psoas muscle की, then there's a referred pain, और नहीं है तो you should also get your knees checked. Anyone in town, come to me, or you have someone good in mind, please just go and get yourself checked. ठीक है. And any other questions that you people have in mind concerning anything in medical point of view, so please send us. Orthopedic, non-orthopedic, any medical question is more than welcome. We'll try to help you all in the best of our abilities. Dr. Mohsen will be with us again, inshallah, soon, and I would like to bring in light the corrective surgeries that he's doing, because मैं खुद उसमें बहुत interested हूँ जानने की जो amazing stuff he's doing. मजे की बात है कि उसमें एक थी जो कि height आपकी increase कर देती, तो मेरा तो उसमें बड़ा interest था. But then again I told him, I don't want to be in bed for a very long time. Sorry, I need to work out. No, So on a lighter note, but मगर वो actually इसलिए नहीं की things are जाती improving on that end as well. So पहले we were putting people in a external fixator for a pretty long time. Now things have improved. We have new equipment. You can put devices inside your bone, which can help you lengthen the bones and gain the length that you need without और इसके अलावा waiting for a long time in the bed. So is that a hint? Okay. दूसरी बात है कि डॉक्टर मोहसिन, आपको किसी ने बहुत हाई बोला है. आपका एक बहुत पुरानी पेशेंट है, बहुत एक्साइटेड है. आई डोंट वांट टू नेम हर, बट आई विल टेल यू लेटर. बट शी इज सेइंग हाई, एंड वो शी इज सेइंग, आई डोंट नो इफ डॉक्टर मोहसिन रिमेंबर्स मी और नॉट. शी हैड एन एंकल इशू, and so there you go. I've said hi to Mohsen, Dr. Mohsen, on your behalf, and I know you're watching. Okay. And so we shall end this session now. I hope we were able to answer these questions to your satisfaction, and would like to meet you people again soon, inshallah. Please stay healthy, stay safe, and stay strong. Dr. Mohsen, you want to say something to the people out there who are watching us? I think in the current era of the COVID virus, it's very important to highlight the facts again. Stay away from misinformation. That's the most important point. Always stick to a proper, authentic news source. If you must know the news, the best safety is in social distancing, covering your face, and talk to people on the phone, meet them online on video calls. Keep your family safe, stay safe, wash your hands, and that's that. And to top it I all, hope to see you again. And to top it all, Dr. Mohsen, I would say कि हम लोग social distancing कहते हैं, हम उसको physical distancing कहते हैं तो बेहतर होगा, क्योंकि वो physically दूर होना. Social तो हम हैं. We are all social. Actually, हम extra social हो गए. Socially तो फिर I think we're much closer than ever before because of these new tools that we're using. So and exactly. 6 feet distance is very important. Please, please, please wear a mask, because it's not only your protection, it's for other people also. Mask is must. Keep your hands clean and stay away from each other, and try not to meet people who you don't know, who have met other people. So it's okay. We'll survive this and we'll work around it. The new normal is a bit different. So see you all, inshallah, next time. Take care. Till then, stay safe, stay healthy, stay strong. Dafiz. Bye. Bye-bye.